जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास लाखों गम हो, चाहे हमारे पास लाखों गम हो, लेकिन यहाँ बैठे हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान मिली है। अब हम अगले कमांडिंग गुरु छात्र मिस्टर प्रियांशु भैया को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्लीज कम ऑन स्टेज मिस्टर प्रियांशु भैया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्रियांशु भैया के लिए। I'm not good at public speaking, but still, given this chance, I would like to express some of my thoughts, and also I want to share some of my experiences which I have gained through these 5 years at IIT. So, hey everyone, my name is Priyanshu Kumar. I did my class 10th in 2018, and then I went to Dakshina Foundation at JNV Bangalore Urban. I did my IIT coaching from JNV Bangalore Urban with the support from Dakshina Foundation. And then in 2020, I got into IIT Kharagpur. Right now, I'm in 5th year pursuing mathematics and computing at IIT Kharagpur. I have got a placement offer from one of the US firm, and then next year I will be graduating and joining the firm. So, are you guys comfortable in English? Yeah. Okay, fine. So, I think most of the points our alumni have already covered, like talking about the teachers, we have very highly qualified teachers here. And then I want to add some of the few points, so back in 2013, when I got to JNV Rohtas, so at that time, like my parents could not afford me to provide assistance and teach me in a private school. So they sent me to JNV Rohtas. At that time, I was not good at my English was not good. But then at JNV Rohtas, I found very great teachers. Like one of our teachers are English sir, and then we had a physics teacher, BK sir, and then we have a chemistry teacher, and then we also have our maths teacher, Vivek sir. So apart from other teachers, these teachers have helped me to grow and shape my personality and character. And then I would like to mention an instance. So मैं जब JNV में आया था, so I was a very not notorious, but I did many mischievous things like going out of the campus and buying non-veg and doing these things. So in my class 8, I thought that I am getting derailed, so I changed my group friend circle, and then I got a new friend circle. In class 9, I started focusing on my interest. So I was very passionate about physics. So again, I would like to say that physics has led me to at IIT because my maths and chemistry was average. I was not very good at that, but I was very passionate about physics. So मैं क्या करता था कि 9th क्लास में मैंने स्टाइलिंग मल्होत्रा का बुक सॉल्व करना स्टार्ट किया था. तो मेरे जो फिजिक्स टीचर थे, मैं जब भी मेरे को न्यूमेरिकल फंसता था, वो कहीं भी दिखते थे इधर एकेडमिक बिल्डिंग में, मैं उनके पास चला जाता था, सर ये न्यूमेरिकल बता दीजिए, एंड ही वुड टेल एवरीथिंग वेरी पोलाइटली. तो तुम लोगों को भी अगर ऐसे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो तुम जाके सर को अप्रोच करो, बिकॉज ही विल नॉट गो आफ्टर यू, यू हैव टू गो आफ्टर हिम एंड देन आस्क कि हाँ सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये बताओ. चाहे वो मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, या फिर सोशल साइंसेज है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सर को अप्रोच करो. हियर टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड. Again, apart from that, like in 9th, 10th, I did this Stalin Malhotra book for physics, and then like in class 10, so again in class 10, my parents told me that they could not afford me to send to Kota and all PG institutes. So I gave the Dakshina Foundation exam in class 10, and I cleared that. I was very lucky enough to got into Dakshina Foundation. And then at there, again there was a very strict discipline at Bangalore Urban because our vice principal was very strict. And then at there, like they used to guide us, like they used to tell us that you have to very disciplined. Like यहाँ पर ज़्यादा discipline नहीं है, but वहाँ पर ऐसा था कि अगर मेरा शूज वॉश नहीं है, तो वो बोलते थे आज क्लास ऑफ है, तुम रूम पे जाके शूज वॉश करो. ऐसे अगर ड्रेस क्लीन नहीं है व्हाइट कलर का, तो वो बोलते थे कि जाओ रूम पे, आज कोई स्टडीज नहीं होगी, तुम ड्रेस क्लीन करो. सो वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था. सो those 2 years were like a jail, I would say. So again, it is very compulsory if you are
ट्रेनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT JEE. लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं वो लोग 9th क्लास से IIT JEE का प्रेप कर रहे थे मतलब एट माई कॉलेज. So they were doing this school and also they were doing this coaching. So they did in 9th, 10th, 11th, 12th. But यहाँ पर हम लोगों को क्या है कि अलग से कोई स्पेशल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है. जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में हमको उसी से सीखना है. And also I want to say कि this school it is the best school in this district because मुझे ऐसा लगता है मैंने देखा है बाहर के स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं their foundation is not good. यहाँ पर जो टीचर्स हमको मिलते हैं they teach us sufficient thing. We have to grasp the thing and learn at our own pace. And then apart from this, I would also like to share that there is one thing in these years which have helped me in IIT. Like some of friends are very good at maths and physics and all, but they lack this communication and speaking skills. So मेरा भी ऐसा था कि स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं था. तो लाइक मेरा जब JEE में था तो मेरे जो इंग्लिश टीचर थे लाइक ही वॉज वेरी गुड. वो ग्रामर और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे. तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला मेरे को कि इंग्लिश मेरे को इम्प्रूव करना है. और मेरे पापा ने मुझे स्पोकन कराया था. लाइक आई वॉज इन क्लास 3. वो मेरे को 10th क्लास के स्टूडेंट्स का स्पोकन कोचिंग भेजते थे. तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया. लाइक मैं अभी IIT में मैंने देखा है कि लोग इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वहाँ पर वो रिक्रूटर के साथ बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे लाइक स्पीकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो मैं बोलता हूँ कि जो भी बच्चे हैं क्लास 6 to 12 सबको अपने इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए. यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स वेदर इट इज सोशल साइंस और साइंस physics, chemistry, math, but you should focus on English because right now in this competitive world, if you go into corporate job, there you have to deal with US clients, so they only understand English language. So you have to be very fluent and you have to make yourself such that you can express everything to that client. Similarly, अगर तुम मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक SSC CGL, वहाँ पर मैंने देखा 43% वेटेज गिवन टू इंग्लिश सब्जेक्ट कंपेयर टू लाइक मैथ्स एंड रीजनिंग एंड ऑल. तो तुम कोई सा भी फील्ड में जाओ यू हैव टू मेक योरसेल्फ दैट तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज वेदर इट इज रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स तीनों पे तुम लोगों को वर्क करना है. तो अगर तुमने इस पे वर्क कर दिया तो मोस्ट ऑफ द फील्ड यू गो यू विल फाइंड दैट यू आर बेटर देन अदर कैंडिडेट्स. लाइक मेरा एक दोस्त है वो जब गया था अपने इंटर्न में तो वो रिक्रूटर से अच्छे से बात नहीं कर पाता बिकॉज हिज इंग्लिश इज नॉट गुड. लाइक ही डिड फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल. सो वहाँ पर उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था बट हिज मैथ्स एंड अदर थिंग्स आर वेरी गुड. So this was one of the things I wanted to mention. Apart from that, I would also like to mention that कि तुम लोग मान लो जो भी यहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो लाइक जयानंद ने ऑलरेडी बताया था कि कुछ लोग होते हैं जिनको बायोलॉजी पसंद नहीं होता. तो मेरे को भी पसंद नहीं था बट लाइक मैंने पढ़ा क्योंकि 10th का स्कोर्स मैटर. तो बायोलॉजी पढ़ के मतलब कुछ स्कोर्स आ गया था मेरा लाइक 92.8 आया था मेरा. फिर ऐसा हुआ कि मैं जब IIT में गया तो वहाँ मैंने देखा कि बायोलॉजी के कोर्स भी पढ़ा रहे हैं. अगर इफ यू गो इनटू अ जॉब देयर आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहाँ पर तुमको लाइक बायोलॉजी की चीजें लाइक डिजीज और ये सब यूज करके तुमको मॉडल्स बनाने हैं और प्रिडिक्ट करना है कि वेदर दिस पर्सन विल हैव अ कैंसर और नॉट. सो अगर वहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि बायोलॉजी हाउ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स वहाँ पर तुम्हें एडवांटेज मिलेगा दूसरे कैंडिडेट्स को. अगर दैट इज द इंजीनियरिंग जॉब लाइक तुम IIT में जाते हो सबको लगता है कि IIT इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग. इट इज नॉट अबाउट इंजीनियरिंग. यू विल get to explore various sectors like whether it is the PSUs like ONGCs, whether it is a finance company like JP Morgan or ICICI Bank or HDFC. You can also get into like core companies, and then apart from that this IT sector where you get to work as a software engineer or data scientist. So there are various opportunities which you will get in IT, and one of the opportunities I would say the library is very good at IT. Like in my campus it is the largest library in all the universities in India. So you will get a very good resources of books and then you can study and go like library is open from like 8 AM till 12 PM. So you can go and study there. Again there are some candidates who are preparing for UPSC. They go to the library and they spend their whole day to study and all. So again if you whether you go in any college or whatever I will also emphasize on one fact that suppose you did not like maths or biology. So if you want to go for a government job, I think you should at this step whether you are in 9th class or 10th class, you should start focusing on that exam, like what is the syllabus or what are the topics which are coming in the exam. So you have to focus on those things. And then also like I want to say that my parents initially wanted me to make a doctor, to become a doctor. But like my interest from the childhood, I had a dream that I want to be a computer engineer. I did not know that what is a computer engineer, what does it do. But like my dream was that I want to only become that thing.
So, like I pursued my dream. I did not like my parents told me. I listened to them. I listened to everyone, but I take the decision on my own. So you have to listen everyone, like your teachers, your parents, and at the end you have to follow your interest, your passion. So my passion was for I am very passionate about physics. So that thing led me to engineering sector. And again, if you go into IIT, you will find that there are various opportunities present in IIT. Like not about only jobs. Like people go in government jobs. Then there are this PSU's company like ONGC, and then there is a company like Bell and all. So these companies these are like partial government companies. So there also the job culture is very good. So apart from that, if you guys want to ask anything, you can ask. Like anything. Okay, fine. If you don't have any question, I will conclude now. I would like to thank you, the school administration and also the organizing team for this decoration and all managing everything. Once again, I am very grateful to the teachers and administration and staffs, and they have really helped me to shape my personality and character. And this was the foundation and building block. This school has provided me the foundation and building block for where right now I am. So I believe that this school has really helped me to get where right now I am, and I am very grateful to this. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी बातों ने हमें काफ़ी प्रभावित किया।